So in the last class we were discussing about the adiabatic process, correct? हाँ सर. Adiabatic process. मैंने adiabatic process को डिफाइन किया था. adiabatic process में वर्क डन का फार्मूला मैंने डिराइव किया था और फिर मैंने डिफरेंट गैसेस के लिए गामा निकाला था. तो मोनोएटॉमिक के लिए मेरा गामा कितना आया था बताइए? 5/3. 5/3. डाइएटॉमिक के लिए कितना आया था? 7/5. हाँ सर. एंड ट्राइएटॉमिक के लिए 4/3 आ गया. तो इन तीन वैल्यूज को याद रखना, बाकी सब कुछ भूल जाओ, कोई बात नहीं. यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, लीनियर ट्राइएटॉमिक के लिए भी यही फार्मूला होता है. लीनियर ट्राइएटॉमिक जैसे CO2 हो गया. और एक जो करा है तो वाइब्रेशनल और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में वाइब्रेशनल को निगलेक्ट कर दिया जाता है. यदि नहीं निगलेक्ट करते हैं तो मैंने आपको करने का तरीका बता ही रखा है. 99% क्वेश्चन में मेंशन करके आता है नेग्लेक्ट द वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. यदि नहीं भी लिखा हुआ है, अनलेस एंड अंटिल इट इज मेंशन्ड दैट वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंसीडर करना है, हम लोग उसको नेग्लेक्ट करके चलेंगे. ठीक है, चलो नेक्स्ट वी विल डिराइव वन फार्मूला फॉर. तो अभी तक हम लोग जनरल आइडियाबैटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं. वी हैव नॉट पुट द कंडीशन ऑफ रिवर्सिबिलिटी एंड इरिवर्सिबिलिटी. जो मैंने वर्क डन का फार्मूला इसके पहले डिराइव किया था, dw इक्वल टू nr dt अपॉन गामा माइनस 1, और वी कैन से w इक्वल टू nr डेल्टा t upon gamma minus 1. This can also be written as delta PV upon gamma minus 1, or we can write it as P2 V2 minus P1 V1 upon gamma minus 1. While deriving this formula, I have not used the condition of reversibility or irreversibility. So this formula is applicable both for the reversible and irreversible adiabatic process. Now we are going to deal with the reversible adiabatic process for the ideal gas. Clear? So reversible adiabatic, ideal gas expansion and compression. Reversible adiabatic, ideal gas expansion with compression. Okay. Now we know that for adiabatic process, du is equal to dw. Du can be written as n/CVm dt, and dw can be written as minus P external dV. Now since I have assumed that process is reversible, so P external can be written as P, so it becomes n CVm dt is equal to minus P dV, correct? And from here I will put the value of CVm, that is nothing but R upon gamma minus 1 dt is equal to minus P dV. So it becomes nR dt, or we can say R upon gamma minus 1 dt is equal to this R upon gamma minus dt is equal to minus P dV, and in place of P I can write as nRT by V dV, correct? In the place of P I have written nRT by V, correct? And why I am substituting like this? Because here the variable of integration is dV, so I have to write P in the form of V. From here nRT
R got cancelled, NR got cancelled, and we are left with dt upon gamma minus 1. So let us take t on the left hand side, dt upon t is equal to, and let us take gamma minus 1 on the right hand side, minus of gamma minus 1 dv by v. Now integrate this from t1 t2 to, or we can and integrate this from v1 to v2. So here I will get ln t from t1 to t2 is equal to minus gamma minus 1 ln v from v1 to v2. So it becomes ln of t2 minus ln of t1. This becomes minus gamma minus 1 ln of v2 minus ln of v1. So this will become ln t2 by t1, and if I take this will become minus gamma minus 1 ln of 2 by v1. Now if I take gamma minus 1 inside the log, it will go in the power. So t2 by t1 is equal to v2 by v1 t power minus gamma minus 1. So I can write it t2 by t1 is equal to v1 by v2 t power gamma minus 1. And from here it becomes t1 v1 t power gamma minus 1 is equal to t2 v2 t power gamma minus 1, or we can say tv t power gamma minus 1 is equal to constant. So this final conclusion you have to memorize. For the reversible adiabatic process, tv की power gamma minus 1 is equal to constant. Okay, copy this. Okay, now I want to derive this expression in the form of PV and PT. Here the variable are TV. I want to derive this equation in the form of PV and PT. तो बहुत सिंपल है, कैसे कर सकते हैं देखो. So TV की power gamma minus 1 is equal to constant. So let us I want to derive it in the terms of PV. So V को इंटैक्ट रहने दो and T को रिप्लेस कर दो P by RT से, करेक्ट. Sorry. No. T will be PV upon R. V की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. सर एन नहीं होगा, एन को छोड़ दो, उससे क्या फर्क पड़ता है. सो PV की पावर गामा एंड दिस R इज कांस्टेंट. ये R इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई फिर से कांस्टेंट ही बन जाएगा. ये आ गया हमारा PV के टर्म में. अब लेट्स जस्ट आई वांट टू डेराइव इन टर्म्स ऑफ P एंड T. तो इस इक्वेशन में T को इंटैक्ट रहने दो और V की जगह पे रख दो RT by T की पावर गामा माइनस 1 is equal to constant. So from here I will get T की पावर गामा, T की पावर गामा माइनस 1, T की पावर गामा माइनस 1, T की पावर 1, it will become T की पावर गामा and T की पावर 1 माइनस गामा. सॉरी, T नीचे है ना. So T की पावर 1 माइनस गामा, सॉरी, T की पावर गामा, T की पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. So don't memorize all the three equation. इसमें से जो आपको सबसे इजी लगती है वो उसको मेमोराइज कर सकते हैं. बाकी वेरिएबल के बीच में पूछे तो आप ऑन स्पॉट तुरंत से डिराइव कर सकते हैं. So maybe you can memorize this one, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. बट दिस इज द इजीएस्ट वन. इसको याद रख लीजिए. बाकी वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप आता है, ऑन स्पॉट यू कैन डिराइव.
Not very difficult, correct? Yes, sir. Okay, but mind it, this is applicable only if the process is reversible, because while deriving these formulas, I have used the condition of reversibility of the process, correct? Okay. हाँ सर, कॉपी कर लिया इसको. हाँ सर चलिए. Now let us process is irreversible. Irreversible, adiabatic, ideal gas, expansion or compression. Okay. Now यहाँ पे दो तरीके से irreversibility हो सकती है. One can be free expansion. What do I mean by free expansion? Free expansion means when the external pressure is zero, then it will become free expansion. So the P external is zero, then dW is equal to nothing but minus P external dV, sorry dV. So it will become zero. So dW is zero. Now since the process is adiabatic, so dQ will be zero. Now according to the first law, du is equal to dQ plus dW. dQ is 0, dW is 0, so du will also become 0. du is 0, dQ is 0, dW is 0. Now I know that dH is equal to du plus d of PV. So since the gas is ideal, in the place of d of PV, I can write nR dt. Okay. Now du is already 0, and if the du is 0 and the gas is ideal, so obviously dt will also be 0, because we know that for the ideal gas, internal energy is a function of temperature only. So if the change in the internal energy is 0, so change in the temperature will also be 0. So from that, dH also becomes 0. Yes, everything will be 0. dH 0, du 0, dq 0, dw 0. For the free expansion, everything is 0. This point is clear? हाँ सर. कॉपी कर लीजिए. Yes sir. Okay. Next, let us see expansion and compression. Expansion oblique compression. Against some external pressure. Okay. So here your du is equal to nothing but dw. So du is equal to dw is nothing but minus p external dv. So since the process is irreversible, p external cannot be equated to the p internal. So यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिखा रहने देंगे, एंड du को हम लोग लिख सकते हैं n cvm dt इक्वल टू माइनस p एक्सटर्नल dv. इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, so it will become n cvm delta t is equal to minus p external delta v. So this will be nothing but n cvm t2 minus t1. This will be minus p external
V2 minus V1 and CVM T2 minus T1 is equal to minus P external. In the place of V2 I can write NR T2 upon T2 minus NR T1 upon P1, and mind it, your P2 is going to be equal to P external, correct? In the question you will be given T1 T2 and you will also be given T1 and generally, sorry, okay, the P2 will be known to you because P external will be given, and out of these three variables T1 T2 P1, some two variable will be given and third one will be asked, correct? हाँ सर. Okay, clear? Yes sir, clear. अभी कर लिया इसको. हाँ सर, कर लिया. Now let us compare between reversible isothermal and reversible adiabatic process. Comparison of reversible isothermal and adiabatic process. इसको हम थोड़ा ग्राफिकली देखते हैं. तो सबसे पहले हम लोग एक्सपेंशन के लिए देखेंगे. इन गैस एक्सपेंशन. Okay, before that let us see the graph, PV graph. Now see, for the isothermal process, PV is equal to constant. Now if PV की power 0 is equal to constant, or we can say if P is equal to constant, that means process is isobaric. So P is equal to constant can be written as PV की power 0 is equal to constant. PV की power 0 is equal to constant, correct? Now if V is equal to constant, so this can be written as PV की power infinity is equal to constant. Why PV की power infinity? Because in volume is constant, so you put any value of pressure, volume is going to be same only. That's why V की power infinity. And here PV की power 1 is equal to constant for the isothermal process, and PV की power gamma is equal to constant for the adiabatic process. So what I want to say 0, this is 1 and gamma is greater than 1. So P is equal to constant will be something like this. It will be something like this. Now V is equal to constant will be something like this. Correct? Because volume is constant, correct? हाँ सर. Now PV is equal to constant. यदि process isothermal है, the graph comes something like this. अब PV की पावर गामा का भी ग्राफ ऐसे कुछ आएगा, बट लेकिन वो PV की पावर 1 के नीचे आएगा. एक प्लेस से स्टार्ट होंगे and PV की पावर गामा will lie down to the PV की पावर 1. So this is PV is equal to constant and this is PV की पावर गामा is equal to constant. और जब ये इंटरसेक्ट करके ऊपर जाएगा तो ये ग्राफ ऊपर हो जाएगा.
ये ग्राफ नीचे आ जाएगा। तो बस इतना ध्यान रखना थोड़ा सा ना। चलो, ये समझ आया कि नहीं? तो हाँ, तो फिर पीवी की पावर गामा बड़ा होगा पीवी से। बड़ा होगा इन द सेंस, व्हाट डू मीन बाय बड़ा होगा? ग्रेटर होगा वैल्यू। नहीं, कौन दोनों तो कांस्टेंट है। व्हाट डू मीन बाय बड़ा होगा, वो तो डिपेंड करता है ना कंडीशन कौन सी है। और आप किस वेरिएबल की बात कर रहे हो? पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू बड़ा होगा, इसका मतलब क्या है? I want to say in the case of expansion, if we start from the same initial condition, then PV की power constant graph will be above the PV की power gamma graph, इस तरीके। और जब compression होगा सेम पॉइंट से तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, इंटरसेक्शन होने के बाद जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा और जो नीचे ऊपर चला जाएगा, ऑब्वियसली करेक्ट। ये दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, तो इस साइड में ये लाइन नीचे है, लेकिन इधर जाएंगे तो ऐसा ये लाइन ऊपर है, करेक्ट। ये एक्सपेंशन की केस में हाँ, ये तो एक्सपेंशन ही हो रहा है ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है भाई, बोलने की क्या जरूरत है। कंप्रेसिबिलिटी में इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे इस इनिशियल पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया, ये वॉल्यूम घट रहा है, मतलब कंप्रेशन हो रहा है। ये बात समझ आई? दिस इज क्लियर? वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ऊपर। हाँ सर, क्लियर। ओके, नाउ शी फर्स्ट लेक्चर डिस्कस गैस एक्सपेंशन। इनमें एक्सपेंशन की बात करता हूँ। और इसमें भी पहला केस ले लेता हूँ मैं, इफ फाइनल वॉल्यूम्स आर सेम। इफ फाइनल वॉल्यूम्स आर सेम, so what I want to say, suppose there are two system, दो सिस्टम है एंड दोनों सेम इनिशियल स्टेज पे हैं, दोनों सेम इनिशियल स्टेज पे हैं। नाउ वन सिस्टम underwent adiabatic expansion and another system underwent isothermal expansion in such a way that their final volumes are same. Once again I am telling, there are two systems which are at the same initial condition. Now one system underwent through adiabatic expansion, another system underwent through isothermal expansion in such a way that their final volumes are same. ठीक है, तो लेट्स से फाइनल वॉल्यूम दोनों के सेम है, सेम इनिशियल स्टेज से स्टार्ट हुए। तो लेट्स से ये ग्राफ है आपका आइसोथर्मल का, एंड ऑब्वियसली आइडियाबैटिक का ग्राफ इसके नीचे आएगा, राइट। एंड दोनों के फाइनल वॉल्यूम सेम है, करेक्ट। ये बात समझ आई कि नहीं? यस सर। नाउ यू कैन सी बाय योरसेल्फ, pressure, final pressure in the case of isothermal is less, more than the final pressure in the case of adiabatic. हाँ हाँ सर। So P isothermal is greater than P adiabatic, हमने ग्राफ से देख लिया, करेक्ट ना। यदि वर्क की बात करें, you can see area under the isothermal curve is more than the area under the adiabatic curve. It means mod of W isothermal is greater than mod of W adiabatic.
मॉज मतलब मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। हाँ सर। क्लियर। आइसोथर्मल प्रोसेस में एडियाबैटिक की कंपेयर में वर्क डन ज्यादा है, राइट। हाँ सर। ओके, नाउ नेक्स्ट केस देखते हैं। इफ फाइनल प्रेशर इज सेम, इफ फाइनल प्रेशर्स आर, so there are two systems again, they are in the same initial state. One underwent through adiabatic expansion and another underwent through isothermal expansion in such a way that their final pressures are same. तो इसको मैं थोड़ा ग्राफिकली बना लेता हूँ। फाइनल प्रेशर सेम है, मतलब लेटर से सेम इनिशियल स्टेट से स्टार्ट हुए एंड दोनों का फाइनल प्रेशर लेटर से ये है। तो लेटर से ये आपका आइसोथर्मल का ग्राफ है एंड आइडियाबैटिक का ग्राफ इसके नीचे आएगा, करेक्ट। क्लियर। you can, this is isothermal and this is adiabatic. Now you can clearly see, so this is, let us say T1 V1, you can clearly see that volume in the case of isothermal is more than volume in case of adiabatic. So this is V iso and this is V idea. So volume of isothermal is more than volume of adiabatic. वर्क जन की बात करते हैं, we can see area under the isothermal curve is more than area under the adiabatic curve. So W isothermal is more than W adiabatic, करेक्ट। हाँ सर। तो गैस एक्सपेंशन के केस में चाहे फाइनल वॉल्यूम सेम हो, चाहे फाइनल प्रेशर सेम हो, दोनों ही केस में आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क का मैग्नीट्यूड adiabatic प्रोसेस के वर्क के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होता है। यदि हम इसको साइन के साथ कंसीडर करें तो हमको पता है एक्सपेंशन के केस में वर्क डन नेगेटिव होता है, तो बड़ा वाला छोटा हो जाएगा। बट इफ वी टॉक ऑफ मैग्नीट्यूड then obviously work done in the case of isothermal process is more than work done in the case of adiabatic process, right। ये बात समझ आ गई कि नहीं। तो हम लोग एक्सपेंशन के केस में जनरलाइज कर सकते हैं। फॉर एक्सपेंशन आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन ज्यादा होगा कंपेयर टू एडियाबैटिक, करेक्ट। इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, तो ये आपके लिए ग्राफ ध्यान रहेगा, तो इसको तुरंत से बना के देख सकते हैं, करेक्ट। क्या अलग से एक्सपेंशन किया? व्हाट किया था। ठीक है ठीक है, समझ गया। डन। हाँ सर। नाउ लेट अस डिस्कस आइडियल गैस कंप्रेशन। आइडियल गैस कंप्रेशन, तो फर्स्ट कंप्रेशन में केस, भी इसमें भी फर्स्ट केस देखते हैं। इफ फाइनल वॉल्यूम्स आर सेम, फाइनल वॉल्यूम्स आर सेम, तो ग्राफिकली देख लेते हैं। ग्राफिकली देखना काफी इजी है। पीवी एंड कंप्रेशन केस में अभी क्या होगा, नाउ द थिंग्स, ग्राफ का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा।
नाउ ऊपर कौन सा ग्राफ होगा अभी ऊपर होगा एडियाबैटिक वाला और नीचे होगा आइसोथर्मल वाला, करेक्ट। ओके, देखो जैसे मैं ये दो ग्राफ बना रहा हूँ, अब इंटरसेक्शन के बाद जो नीचे था वो इंटरसेक्शन के बाद ऊपर हो जाएगा कि नहीं। तो एक्सपेंशन हो रहा है मतलब इंटरसेक्शन के बाद की बात कर रहा हूँ, कंप्रेशन हो रहा है मतलब इंटरसेक्शन के पहले की बात कर रहे हैं। तो एडियाबैटिक नीचे था, अभी एडियाबैटिक ऊपर पहुंच जाएगा। Now हाँ final one. So this is, let us say, P1 V1 and we can see V2 is same for both. हम लोग क्लियरली देख सकते हैं एडियाबैटिक के केस में प्रेशर आइसोथर्मल से ज़्यादा है। P adiabatic is more than P isothermal। वर्क डन की बात करते हैं, then देख सकते हैं एरिया अंडर द adiabatic कर्व इज मोर देन एरिया अंडर द आइसोथर्मल कर्व। W adiabatic इज मोर देन W isothermal। यहाँ पे मॉड्यूलस क्यों नहीं लगा रहा हूँ, बिकॉज कंप्रेशन हो रहा है तो ऑलरेडी वर्क डन पॉजिटिव ही है, करेक्ट। एंड सेकेंड केस देख लेते हैं, इफ फाइनल प्रेशर इज सेम, फाइनल प्रेशर आर सेम, इसको ग्राफिकली देख लेते हैं। फाइनल प्रेशर सेम है, मैं जैसे फाइनल प्रेशर में ये बना देता हूँ, ऊपर वाला हो गया एडियाबैटिक, नीचे वाला हो गया आइसोथर्मल। P1 V1 एंड दिस वन इज P2। हम लोग क्लियरली देख सकते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में वॉल्यूम ज़्यादा है, V adiabatic is more than V isothermal, correct। V adiabatic is more than V isothermal। अब ये यहाँ पे हम लोग एरिया अंडर कर्व की बात करें तो हम लोग एग्जैक्टली बता नहीं सकते कौन बड़ा है कौन छोटा है जब तक एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं करेंगे। जस्ट बाय लुकिंग एट द ग्राफ इट इज नॉट पॉसिबल टू टेल व्हिच वन इज मोर व्हिच वन इज लेस, ठीक है। बिकॉज क्यों नहीं बता सकते, दोनों में कॉमन एरिया तो ये है, दोनों में कॉमन एरिया ये है। अब एडियाबैटिक में ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा है और आइसोथर्मल में ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा है। अब इन दोनों पोर्शन में कौन सा बड़ा है हम लोग देख के नहीं बता सकते, until unless we don't calculate we cannot tell it। अब यहाँ पे देखने में आइसो बड़ा लग रहा है इसलिए हम नहीं बोल देंगे बड़ा है, वो हमने ग्राफ बनाया उससे देखने में बड़ा छोटा लग सकता है, करेक्ट। बट हम लोग क्लियरली नहीं बोल सकते कि भाई इन दोनों में से कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, करेक्ट। सो हियर वी कांट से एनीथिंग अबाउट वर्क, किसका वर्क बड़ा होगा किसका वर्क छोटा होगा, इट कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड। ये बात समझ आई कि नहीं। यस सर। तो कंपैरिजन ऑफ वर्क इज नॉट क्वालिटेटिवली पॉसिबल। क्लियर। यस सर। Okay, next we will discuss about the polytropic process। Polytropic process। So we have seen the work done in the isobaric, isochoric, isothermal. We have discussed adiabatic, and we have done the comparison of isothermal and adiabatic. Now we will discuss the polytropic process। So polytropic process is nothing but it is any general process Pv to the power x is equal to constant।
Any general process is known as polytropic process. Now when the x is equal to 1, it becomes isothermal, correct? When x is equal to 0, it becomes isobaric. When x is equal to infinite, it becomes isochoric. When x is equal to gamma, it becomes adiabatic. Any general process is known as polytropic process. Okay. Now for polytropic process, there is a relation of heat capacity. Cm is equal to Cvm plus R upon 1 minus x. What is the Cm? Cm is the molar heat capacity. Cvm represent molar heat capacity at constant volume, and R is the gas constant, and X is this value, correct? I want to derive this. How to derive this? So see, we know that from the first law, du is equal to dq plus dw. Du is nothing but n Cvm dt, and dq can be written as n Cm dt, correct? You can write on, and dw can be written as minus P dv. From here we get Cm is equal to Cvm plus P by N dv by dt. मैंने कुछ नहीं किया, पूरी इक्वेशन को n dt से डिवाइड कर दिया एंड P dv को इधर ले लिया, ये Cvm बन गया एंड दिस बिकम P by N dv by dt. नाउ इस पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है जो भी प्रोसेस गिवन है उसके लिए. अप टू दिस कोई भी आपको प्रोसेस दी हुई हो, किसी भी फॉर्मेट में दे रखी हो, यहां तक तो आपको करना ही है. अब इस पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है उस प्रोसेस की हेल्प से और आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प से. So this particular term you have to calculate with the help of the process and with the help of ideal gas equation. तो इसकी वैल्यू जो भी आ जाए उसको यहाँ पे पुट कर देना, आपका मोलर हीट कैपेसिटी का जनरल एक्सप्रेशन आ जाएगा. तो लेट्स से हमारी प्रोसेस है Pv to the power x इक्वल टू कांस्टेंट, उसके लिए मैं इस टर्म की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा. पहले इसको कॉपी कर लो. डन? नहीं सर, यस अभी स्टार्ट किया. यस प्लीज कॉपी इट. Yes sir. Okay, let us derive the value of this expression. So I have to calculate P by N dv by dt.
This I have to calculate. Our process is PV to the power x is equal to constant. So I have to calculate dV by dt. So मुझे अपने एक्सप्रेशन से P को गायब करना है. अगर आपको dV by dt निकालना है तो एक्सप्रेशन में V और T होना चाहिए ना. और P को कैसे गायब करेंगे? आइडियल गैस इक्वेशन में यूज करते हैं. So this became nRT by V, P to the power x is equal to constant. Correct? So this becomes nRT V to the power x minus 1 is equal to constant. Now V to the power x minus 1 को हम लोग लेफ्ट साइड में ही रखते हैं, इसको इधर लेके चले जाते हैं. कांस्टेंट को k बोल देते हैं, k अपॉन n r t. करेक्ट? हाँ सर. Yes sir. Okay. Now just differentiate this expression. Just you have to differentiate this. One second. This is maybe what we can do. Yes. What we can do. One second. I will just take v to the power x minus 1 to the right hand side and this left hand side. Okay. So the k and RT let it be here only, and it becomes k upon v to the power x minus 1. Correct? Now see, nRT is equal to k upon v to the power x minus 1. So I can write it nRT is equal to k v की पावर 1 minus x. करेक्ट? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? हाँ. Just differentiate this. Differentiate this. nRT is equal to k, इसको differentiate करो 1 minus x की पावर 1 minus x v to the power minus x dv. Correct? Now I have to calculate dv by dt. So nr dt, in the place of k I can write pv to the power x. Correct? pv to the power x 1 minus x v to the power minus x dv. तो v to the power x v to the power minus x आपका 1 बन गया. nr dt is equal to p into 1 minus x dv. यहाँ से p अपॉन n dv by dt की वैल्यू कितनी आ गई? r अपॉन 1 माइनस एक्स. मुझे यही चाहिए था. उसकी वैल्यू कितनी आ गई? r अपॉन 1 माइनस एक्स. हमारा एक्सप्रेशन क्या बन गया? cm इज इक्वल टू cvm प्लस r अपॉन 1 माइनस एक्स. क्लियर है ना? Yes sir. ठीक है. तो आपको एग्जाम में कोई भी रैंडम प्रोसेस दे सकता है. यदि ये पर्टिकुलर प्रोसेस दिया तो हम लोग इसको यूज कर लेंगे. इन द एग्जाम you may be given any random process, and for that process you will have to calculate the expression of heat capacity. Process is same, I have told you.
फर्स्ट लॉ को यूज करो, फर्स्ट लॉ को यूज करके इस टर्म का वैल्यू निकाल लो, उस प्रोसेस का यूज करके और आइडियल गैस का एक्सप्रेशन का यूज करके जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वही आपके हीट कैपेसिटी का एक्सप्रेशन होगा, राइट। हाँ सर। क्लियर, ओके। कॉपी। कॉपी कर नहीं सकता। Okay, now let us see work done in the polytropic process. Work done in polytropic process. I know that du is equal to dq plus dw. So du is nothing but, so from here I can get dw is nothing but du minus dq, correct? Yes sir. Okay, so dw is nothing but du minus dq, and your du is nothing but n cvm dt, and your dq is nothing but n cm dt. So now take n dt common, it becomes cvm minus cm, and cvm minus cm will be nothing but r upon x minus 1, correct? Because I know that cm is equal to nothing but what? cvm plus r upon 1 minus x. So from here cvm minus cm is nothing but minus r upon 1 minus x, or we can say r upon x minus. अब इसको इंटीग्रेट कर दो, it becomes w is equal to nr delta t upon x minus 1, or this can also be written as delta of tv upon x minus 1, or we can say p2 v2 minus p1 v1 upon x minus 1. समझ आया भाई? एंड x की हाँ जगह पे गामा रख दो तो वही बन जाता है आपका एडियाबैटिक। हमारा एडियाबैटिक में भी यही एक्सप्रेशन आया था कि नहीं? x की जगह पे गामा था ना? हाँ सर। ठीक है, कॉपी कर लो। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसेस। वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। ओके, साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो। जैसे पीवी ग्राफ है, जैसे देखिए साइक्लिक प्रोसेस हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं। एरिया एंड द पीवी कर्व इज नथिंग बट वर्क डन। जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ए से बी गया, बी से फिर सी में गया, फिर से सी से डी में गया।
इस तरीके से मैं साइकिल में जा रहा हूँ क्लॉकवाइज। तो वर्क डन इज नथिंग बट वर्क डन नथिंग बट एरिया ऑफ ए बी सी डी। ये तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब साइन कैसे साइन करना है देखो, तो साइन के लिए देखते हैं। जब मैं ए से बी में गया तो एक्सपेंशन हो रहा है कर, तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज नथिंग बट नेगेटिव बिकॉज एक्सपेंशन हो रहा है कर। वर्क डन फ्रॉम बी टू सी नथिंग बट जीरो बिकॉज देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम। वर्क डन फ्रॉम सी टू डी इज पॉजिटिव बिकॉज कंप्रेशन हो रहा है। एंड वर्क डन फ्रॉम D to A is again zero because there is no change in volume। अब आप देख सकते हैं A to B वाले का मैग्नीट्यूड C to D वाले से ज्यादा है, मतलब नेगेटिव वाले का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव वाले से ज्यादा है। तो नेट वर्क डन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आएगा कि नहीं, नेगेटिव आएगा कि नहीं? समझ नहीं आया। ठीक है, देखो जब हम लोग A से B में जा रहे हैं तो एक्सपेंशन हो रहा है कि नहीं? तो भी हाँ सर। एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन नेगेटिव होगा कि नहीं? तो हाँ। B से C में जीरो होगा कि नहीं? हाँ होगा। C से D में कॉम्प्रेशन हो रहा है कि नहीं? कंप्रेशन और हाँ पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का जीरो। अब यहाँ पे देखो A से B के, जब मैं A से B जा रहा हूँ तब एरिया अंडर द कर्व जब मैं C से D जा रहा हूँ उससे ज्यादा है कि नहीं? हाँ ज्यादा है। तो नेगेटिव वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो जब नेट वर्क जब निकालेंगे इसका तो नेगेटिव ही तो आएगा। हाँ समझ गए। ठीक, तो अभी हम इन जनरल याद रख सकते हैं जब भी हम लोग क्लॉकवाइज जा रहे हैं साइक्लिक प्रोसेस में तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। क्लॉकवाइज वर्क डन हमेशा नेगेटिव रहेगा। ओके। तो याद रखते हैं क्लॉकवाइज नेगेटिव। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज का भी। जैसे मैंने स्टार्ट किया यहाँ से, ए से गया बी, बी से गया सी और सी से फिर से ए पे आ गया। अब देखो यहाँ पे मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, तो देखो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ये आपका पॉजिटिव होगा बिकॉज कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन होगा। अरे वॉल्यूम कम हो रहा है कि नहीं, देखो ना ए से बी में। वो हाँ कोई कंप्रेशन नहीं ना एक्सपेंशन। एंड वर्क डन फ्रॉम B to C will be zero because there is no change in volume, and work done from C to A will be negative because there is expansion, correct? C to A वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एक्सपेंशन होगा कि नहीं? क्लियर? ओके। नाउ आप देख सकते हैं कि जब मैं A से B जा रहा हूँ तो एरिया अंडर द कर्व ज्यादा है कंपेयर टू जब मैं C से A जा रहा हूँ। तो कंप्रेशन के केस में एरिया ज्यादा है, या हम लोग बोल सकते हैं कंप्रेशन के केस में मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो पॉजिटिव वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो नेट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा कि नहीं? हाँ सर। तो जब भी एंटी क्लॉकवाइज हो तो इन जनरल हम याद रख सकते हैं वर्क डन हमेशा पॉजिटिव आएगा। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, उसका एरिया निकाल लो बस। एंटी क्लॉकवाइज में वर्क डन इज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव।
मैग्नीट्यूड कैसे हाँ निकालना सर। है? मैग्नीट्यूड तो एरिया निकालो, दे देगा कर। ये बात समझ आ हाँ गई? सर। यस सर। चलो, एक लास्ट और बचता है वर्क डन का कैलकुलेशन, दैट इज वर्क डन इन अ केमिकल रिएक्शन। बड़ा खतरनाक है। तो कॉपी कर लिया मैंने। ओके, वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन taking place at constant temperature and pressure. Taking place at constant temperature and pressure. Okay, so I know that dW is equal to nothing but minus T external into dV by the definition of work. सिंस हम लोग प्रोसेस को मान लेंगे रिवर्सिबल है, dW को हम लोग माइनस T dV लिख सकते हैं, और वो नहीं भी करो तो हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, T external dV which becomes W is equal to minus T external डेल्टा V। ये जनरल फार्मूला है। तो मैं किसी भी केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल लेता हूँ, जैसे CO3 सॉलिड से बन रहा है CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। ठीक है, अब इस प्रोसेस के लिए आपको डेल्टा V निकालना है, बिकॉज P एक्सटर्नल तो आपको गिवन ही रहेगा, यू हैव टू कैलकुलेट डेल्टा V। तो डेल्टा V इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ CaO सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस माइनस वॉल्यूम ऑफ CO3 सॉलिड। अब मुझे पता है कि गैस के कंपेयर में सॉलिड का वॉल्यूम नेग्लिजिबल रहता है कि नहीं। हाँ सर। डेल्टा V को सीधा सीधा लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस। ये बात समझ आती है कि नहीं? हाँ अब हम लोग वॉल्यूम को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 गैस इंटू RT अपॉन P, करेक्ट? लिख सकते हैं कि नहीं? वॉल्यूम इक्वल टू एनआरटी बाई पी लिख सकता हूँ कि नहीं? इतना पूरा सरप्राइज हाँ, होके देखने लिख लगता है। सकते हैं। तो अभी मेरा W क्या लिखना बन गया, पड़ता है। W इक्वल टू नथिंग बट माइनस T एक्सटर्नल डेल्टा V क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 गैस इंटू RT अपॉन P। अब यदि प्रोसेस रिवर्सिबल है, जो कि मैं अज्यूम करके चलूंगा, तो P एक्सटर्नल एंड P ये दोनों सेम होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। W इक्वल टू माइनस N CO2 गैस RT, ये बन गया फार्मूला। ठीक है, तो ये तो मैंने एक स्पेसिफिक एग्जांपल लिया, मैं एक जनरल एग्जांपल लेके इसको फार्मूले के फॉर्म में ले आता हूँ। हाँ, ये नहीं, तो मैंने जितना लिखा डेल्टा भी बस निकाल देना है, पुट कर देना है। हाँ, बस वही करना CO2 है। तो वैसे भी हाँ जरूरत नहीं है, कर लो। नहीं नहीं, जरूरत है, वहां पे आपको डेल्टा भी नहीं दिया होगा। you'll have to bring delta V in the form of number of moles of gas. Delta V will not be given. फार्मूला नहीं याद होगा तो कर नहीं पाएंगे क्वेश्चन, फार्मूला जरूरी है।
ओके, इसको कॉपी कर लिया। चलिए। Let's take the general example. Let's just say a mole of A gas plus B mole of B gas giving you, let's just say C mole of C solid. यहाँ से डेल्टा B कितना हो जाएगा? C, this is small c into molar volume of C solid minus A into molar volume of A gas minus B into molar volume of B gas. माइंड लीजिए सॉलिड है, इसका वॉल्यूम गैसेस की कंपनी में नेग्लिजिबल रहता है, तो इसको तो हटा देंगे। फिर बचा क्या? माइनस ऑफ A प्लस B मोलर वॉल्यूम। कोई भी गैस हो मोलर वॉल्यूम तो सेम ही रहता है ना, नो हाँ मैटर गैस इज देयर, मोलर वॉल्यूम सेम ही रहता है, चाहे बी ए गैस हो चाहे बी गैस हो, तो उसको हम पीएम लिख सकते हैं। ओके, हाँ सर। अब इसको इन जनरल हम लिख सकते हैं डेल्टा एन जी इंटू वीएम, और वी कैन से राइट इट यस। तो ये यहाँ तक समझ आया कहानी? ओके। ओके, नाउ this is nothing but this is the change in the gaseous mole. गैसियस मोल में जो चेंज हो रहा है वही तो है ये टर्म, तो इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एन जी, and molar volume is nothing but RT by P. क्लियर और नॉट? भाई ये टर्म आपका क्या दे रहा है? ये टर्म मैंने कैसे कैलकुलेट किया? प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स। अब उसमें सॉलिड लिक्विड होगा वो तो सब नेग्लेक्ट कर दूंगा, केवल गैसियस वाले लेने हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे लेक्चर जी यूज कर रहा हूँ। ये टर्म एक्चुअली क्या आ रहा है? हमारे गैसियस मोल्स में जो चेंज है वही तो आ रहा है, तो उसको सीधा डेल्टा एन जी से लिख दिया यहाँ पे। ना मोलर वॉल्यूम इज नथिंग बट आरटी बाई पी, तो ये हमारा डेल्टा भी आ गया। नाउ डब्ल्यू इज इक्वल टू नथिंग बट माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, डेल्टा वी की जगह पर लिख देंगे डेल्टा एन जी आर टी बाई पी। इसमें प्रोसेस को रिवर्सिबल अज्यूम करके रखा हूँ, पी एंड पी एक्सटर्नल सेम होंगे, डब्ल्यू क्या बन जाएगा? माइनस डेल्टा एन जी आर टी। दिस इज द जनरल फार्मूला दैट यू हैव टू कीप इन माइंड फॉर अ केमिकल रिएक्शन। डेल्टा एन जी नथिंग बट चेंज इन gaseous mole। ये बात समझ आती है कि नहीं? ओके, कॉपी। नेक्स्ट राइट डाउन लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सर कितना लिमिटेशन है? मेरे 5-6 लाइन बता। बस 2-3 लाइन है। लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ, ओके। तो लिखना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज अनेबल टू गिव आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज अनेबल टू गिव द आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। What are these questions? Right, number 1, is complete conversion of heat into work possible? क्या हीट का वर्क में 100% कन्वर्जन पॉसिबल है? इसके बारे में फर्स्ट लॉ
कुछ भी नहीं बताता है. Its complete conversion of heat into work is possible. Second, is a particular reaction oblique process feasible or not? क्या कोई भी particular process possible होगी कि नहीं होगी, इसके बारे में फर्स्ट लॉ कुछ भी नहीं बताता. Is a particular reaction oblique process feasible or not? What is a particular? Is a particular reaction oblique process is feasible or not? Is a particular process or reaction is feasible or not? Yes, sir. Third is, to what extent does reaction proceed? To what extent does reaction proceed? So these three questions cannot be answered by the first law, so it will be answered by the second law, third law. So in the next class we will start with the second law. हाँ Till now we were discussing about the first law. सर अभी तो फर्स्ट हो गया, अभी ठीक है तो मिलेगा. What happened?